जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jkssb की। इसमें सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई है मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट की, जो वैकेंसीज आउट हुई थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जिसका नोटिफिकेशन नंबर था 4/2020। तो आइए इसको चेक करते हैं। सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट, आइटम नंबर था जिसका 87, 91 एंड 95 ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यूटी कैडर की जो वैकेंसीज आउट हुई थी, कुछ डिवीज़न कैडर की थी, जम्मू कश्मीर दोनों जगह के लिए। नोटिफिकेशन नंबर था 4/2020 और 16/12/2020 को ये आउट हुई थी। अब इसको कैंसिल कर दिया गया, कैंसिलेशन ऑफ सिलेक्शन देयर ऑफ। तो किस वजह से कैंसिल किया है ये इसको चेक करते हैं। Whereas the Jammu and Kashmir Service Selection Board notified the selection list of the candidate for the post of motor vehicle traffic assistant, आइटम नंबर ये मेंशन किया यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यूटी एंड डिविजनल कैडर जम्मू कश्मीर, एडवर्टाइज नंबर था 4/2020। इंटेंडिंग डिपार्टमेंट को जब ये फॉरवर्ड की फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, वेयरएज अमंग अदर्स द रिकमेंडेशंस ऑफ मिस्टर शाहिद जमीर अहमद सन ऑफ शाहिद अहमद शाह बिदर figuring at serial number 1 RBA category में in the selection list for the post of motor vehicle assistant ड्यूटी कैडर, आइटम नंबर 87 था। इसको विद हेल्ड कर दिए गए थे। इसकी सिलेक्शन केप्ट विद हेल्ड सब्जेक्ट टू इक्विवेलेंस और रेलिवेंस ऑफ क्वालिफिकेशन विद द प्रिस्क्राइब्ड वन। Whereas the jkssb वाइड लेटर नंबर इतना फॉलोड बाय रिमाइंडर डेटेड इतना इतना अप द मैटर with higher education department to clarify whether the 1-year board based basic training course in automobile sector and 6-month advanced module of electrical electronics and air conditioning in automobile sector and 6 months specialized on the job training total 2 years can be considered for the post of motor vehicle traffic assistant or otherwise, and whereas the higher education department वाइड लेटर नंबर यहाँ पर मेंशन किया है, claimed as under the board based basic training scheme in the COE was started in the year 2007 with an objective to provide skilled workforce to industries. The candidates on successful completions of their training were awarded in national trade certificate under the COE scheme. The COE scheme has since been discontinued from अगस्त 2015 से इसको बंद कर दिया गया था। In condition, the trades being offered under the CTS have also been made NSQF compliant. Therefore, the erstwhile 2-year COE trade, which were found by a combination of 1 year VVT plus 6-month advanced module and another 6 months of specialized module, is no longer equivalent with mechanic motor vehicle trade under the CTS. In those only, the DGT had revised the private candidate guidelines for certifications in which the private candidate can appear for the CTS scheme. Under these guidelines, the erstwhile COE based candidate can also obtain the NTC in the mapped trade. Therefore, as per the existing provision, COE candidate can register as private candidates and appear in the AITT examinations in the mapped trades. Whereas the case of the said candidates was again placed in the 260th board meeting held on 15/2/2024, which decided as under the board deliberated the matter and observed that there is an ambiguity in the clarifications furnished by higher education department and the concerned selection divisions would need to re-examine it more specifically with reference to the date of completion of the degree by the candidate. Whereas the matter was again taken up with the higher education department, letter number itna, to clarify indicate whether the candidate can be considered as eligible for the post as per the educational qualification possessed by him. Whereas the higher education department, while letter number itna, dated itna, has conveyed as under the 1-year board based training in automobile sector and 6-month advanced module of auto electrical electronics and air conditioning in automobile sector and 6 months specialized on the job training total 2 years at ITI Srinagar is not equivalent to 10th with ITI motor mechanic vehicle of 2 years course from any recognized institute as per the clarification provided by Director General of Training
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वाइड इतना। तो इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी ये +2 की इक्विवेलेंट नहीं था। +2 और विद ITI मोटर व्हीकल मैकेनिक 2 ईयर्स के कोर्सेज को काउंट नहीं किया जाता था। ये दिल्ली वाले जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये वहाँ पर मेंशन किया है। वेयर एज द विदहेल्ड रिकमेंडेशन केस ऑफ मिस्टर साहिद Zamir Ahmed selected for the post of motor vehicle assistant UT cadre item number इतना figuring at serial number 1 was again placed in 284th meeting board meeting for discussions and deliberations, and the board took the decision reproduced as under. The board deliberations and deliberated the case and taking a note of the gratification from the higher education department wide letter number इतना date इतना decided to cancel the withheld recommendations of the candidate, namely यानी इसकी सिलेक्शन लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। RB कैटेगरी से जो बिलोंग करता है अंडर आइटम नंबर इतना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और डिवीजन इंडिकेटर अकाउंट ऑफ फेलिंग टू मीट द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन। नाउ देयरफॉर इन व्यू ऑफ द अबव स्टेटेड फैक्ट्स एंड डिसीजंस ऑफ द बोर्ड द विदहेल्ड रिकमेंडेशंस ऑफ मोटर व्हीकल असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट परसुएंट टू एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना हेयर बाई कैंसल्ड, यानी कैसे कैंसिल कर दिया गया था। इंडियन डिपार्टमेंट में ऑपरेट द वेटिंग लिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद एक्सटेंड, यानी जब इसकी सिलेक्शन लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया तो इसके बाद वेटिंग लिस्ट आउट होगी और जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में फाल करेगा उसकी जॉब लग जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी नया अपडेट आएगा उसकी जानकारी आप लोगों के चैनल पर दी जाएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।